सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। सो लेट्स वी हैव a function y equal to f of x. So what will be derivative of y prime, and it will represent as dy by dx equal to df by dx. In mathematical physics, derivative gives idea about how rapidly function is changing with respect to another variable. Here y is function of f, so dy by dx will give us analogy about how fastly or rapidly or slowly a function y is changing with respect to x. You can say here y equal to c, so it is a constant. In constant there will be no change, so y prime equal to 0. Here c, two functions are here, this function and this function. You can see at this certain point the curve b is changing faster than a, so derivative of b is more than derivative of a. Now we can see it's a curve, and at these points a, b, c and d, the slope is 0. Slope is 0 means derivative is 0. You can say, so at this point x equal to a, b, c, d, e, df by dx equal to 0. So these points are said to be local maxima or minima. Here is another function e raised to the power x, which we call monotonic increasing function. So in this function there will be no local minima or maxima. And why it is monotonic increasing? Because if we take 2 points x1 and x2, then at these 2 points value of function will be more at 2 than 1. This is called monotonic increasing function. And how we will deduce maximum and minima? So see here, suppose this is a point, okay, so at this a minus, what will be the slope is this theta less than 90, and theta less than 90 is positive, okay. And see here a plus, so we will draw a tangent. This is the theta, this is the slope, and theta is greater than 90. So when theta is greater than 90, what will we give? Negative. So here a minus is positive and a plus is negative, means if we go down from this point, अगर हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या आता है अपना पॉजिटिव, और इस पॉइंट से इधर की तरफ जाते हैं आगे की तरफ ए प्लस की तरफ, थीटा क्या आता है? नेगेटिव। मतलब यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है, इसका मतलब डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा? अपना मैक्सिमा होगा। और इसी तरह इसकी कॉन्केविटी डी टू एफ बाई डी स्क्वायर क्या होगी? लेस देन 0 होगी, ठीक है। सो मैक्सिमा के लिए लेस देन 0 और मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0। और व्हेन एवर डी टू एफ बाई डी स्क्वायर 0, वी कॉल इट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सेटल पॉइंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ग्रेडियंट। सो सी, इफ वी हैव एनी स्केलर फंक्शन t equal to txyz, so its derivative dt will be full differentiation will be del t by del x dx, del t by del y dy, and del t by del z dz. So we can write it separately in terms of I cap, j cap, k cap, del t by del x I cap, del t by del y j cap, del t by del z k cap, and dr. What is dr? dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. So here we can write dt equal to gradient of t dot tr. This we call gradient. So as you can see here, dot product of two vectors. Dot product of two vectors means gradient of scalar. Gradient of this scalar t is a
vector quantity. Del t is a vector quantity. Okay, let's move forward. ग्रेडियंट हमेशा नॉर्मल होती है, ये भी याद रखना है, ग्रेडियंट सरफेस की हमेशा नॉर्मल होती है. So here we can write dt equal to del t del r cos theta. So gradient t, grade of t equal to dt upon dr cos theta. Means what is the gradient? Gradient is change in the scalar function with respect to the position vector here. So what will be the direction of grade t? The direction of gradient of t will be equal to the change of t in maximum direction of r, where t is changing maximum in the direction of r, the same direction will be called as direction of grade t. So del t gives us slope along the maximum change direction for the scalar t. Here you can see find del t, and what is del t? We know grade t. Grade t is, let t is a function of r, so what will be the function? Under root x square plus y square plus z square. So gradient of t will be grade of t, है ना. So इसका क्या होगा? 1/2 del r and 2x, है ना. ये हो गया ना अपना फंक्शन अंडर रूट एक्स वाला. तो इसका ग्रेड क्या बनेगा? 1/2 रूट एक्स. अब यहाँ पे एक्स क्या है? आर है, इसलिए यहाँ पे आर है. और फिर एक तो एक्स स्क्वायर का होगा, इसलिए 2x. ठीक है, यहाँ 2r 2y 2r 2z. सो दिस विल बी द ग्रेडियंट. ओके, next question, gradient of this scalar function. So del by del x t I cap. So 3x square I cap, 3y square j, and 4z cube 3. Now for this function, del by del x of t I cap. T into I cap. Okay, so 2x by cube z की पावर 4 I cap, ऐसे सेम चलता रहेगा. Similarly here, first will be differentiation with respect to x, then differentiation with respect to y, and then differentiation with respect to z. Okay, now what is del? Del is a vector differential operator. Here it is not a usual vector like L. L अपना एंगुलर मोमेंटम होता है ना, तो L क्या होता है? Lx I cap, Ly j cap और Lz k cap. And how we write x? Lx, x क्या गया तो y del by del z माइनस z del by del. अब y क्या होगा? Ly इक्वल टू z del by del x माइनस x del by del z. Okay, now we'll move forward using vector a and del vector differential operator. Suppose we have a usual vector a and we multiplied it with a scalar function a, so will be a. But here gradient t will be minus del t, है ना. माइनस एक कस्टमरी ऑपरेटर है ना, कस्टमर साइन के जैसा आया है. ठीक है, तो देख लेंगे अपन जब भी अपनी सिचुएशन आएगी तो. अब देखो मल्टीप्लिकेशन विद अदर वेक्टर b, a डॉट b और a क्रॉस b. लेकिन इसका क्या होगा? डेल डॉट a, ये क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस. और ये क्या हो जाता है? कर्ल. सो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर एंड कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ए वेक्टर. एंड वी आल्सो स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज विथ डिस्टेंस. ये तो अपने को बताइए, ग्रेड टी है ना. ये डेल टी बाई डेल आर मैक्सिमम. और ये क्या बता रहा है? माइनस साइन कस्टमरी था ना, वो क्या था? डिक्रीज विथ डिस्टेंस. मीन्स द स्केलर फंक्शन t is decreasing with distance.
यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो सरफेस दे दी अपने को और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो क्या निकाल लो, इसका ग्रेडियंट निकाल लो। ठीक है, क्या निकालना है, ग्रेडियंट। अगर वेक्टर होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल, लेकिन यहाँ पे स्केलर फंक्शन दिया है इसलिए ग्रेड निकालनी पड़ेगी। सो ग्रेड विल बी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड सेपरेटली। ठीक है, इस पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का वाई के रिस्पेक्ट में और इस पूरे का जेड के रिस्पेक्ट में। सो विल हैव दिस 8.111, we have this and unit normal vector divided by its mod. Okay, hope you got it. Now other function, question number 2, we have this function f. So del f will be 6 I cap, 4 j cap and k cap, and del f at this point 117. We have this, and this will be the unit normal vector. Now next question is interesting. What it is saying, suppose we have this scalar function and this scalar function, so we have to find the angle between these two. So angle between the surfaces at any given point will be equal to the angle between normals or the angle between tangents. तो जब भी अपने को दो सरफेस दिए हो तो उनके बीच का एंगल या तो उनकी टेंजेंट के बीच का एंगल होगा या किसके बीच का, नॉर्मल के बीच का एंगल होगा। अब अपन निकाल लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकलेगा, वही ग्रेड फाई 1 एंड ग्रेड फाई 2 से। ठीक है, सो ग्रेड फाई 1 निकालेंगे तो अपना वेक्टर आया ये वाला, इसका नॉर्मल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सो इट विल बी n1 कैप एंड दिस विल बी n2 कैप। अब वी हैव टू वेक्टर्स n1 कैप एंड n2 कैप। सो व्हाट विल बी द एंगल, so we know n1 vector dot n2 vector equal to n1 n2 cos theta. So cos theta will be equal to n1 dot n2 divided by modulus n1 n2. This is okay. So put these values here and we'll get the angle. Now we will go towards directional derivative of phi. Suppose we have the scalar function and point and direction of other vector. So first of all we will find grade t, it will be normal vector. So we have here grade phi. Okay, so this will be the grade phi, means it is a normal vector. Now directional derivative is just like the projection. What is the directional derivative? It is just like the same as projection. And how we find projection? देखो डायरेक्शन कहाँ दिए, ये, तो जिसकी डायरेक्शन दी वो जाता है नीचे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पे जाता है उसको रखना पड़ता है नीचे और ऊपर आता है ए डॉट बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसको रख दो नीचे, है ना, इजी है। देखो यहाँ भी निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का, किसका, फंक्शन का। सो वी हैव द फंक्शन फाई हियर एंड दिस इज द पॉइंट। सो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। सो देखो किसी भी फंक्शन के ऊपर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट, और उसी पॉइंट पर अपन डेल फाई निकालेंगे तो दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्या होंगे, दोनों नॉर्मल होंगे। सो डेल फाई इज द नॉर्मल एट दैट पॉइंट बी एंड टेंजेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट विल द एंगल, 90 degree. Okay, so if these two vectors are at 90 degree then position will be 0. Now we have some cases. Suppose a particle is moving as it is given, find the component of its velocity and acceleration.
अपने को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। सो वेलोसिटी तो क्या होगी, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, ये आ जाएगी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आ गई अपनी ग्रेड आर। क्या आ गई वेलोसिटी? ग्रेड आर। ठीक है, ये आ गई अपनी वेलोसिटी। अब अपने को निकालना है डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन दी मतलब ग्रेड का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा? ग्रेडियंट का। ओके, सो वी हैव द वेलोसिटी नाउ इन द डायरेक्शन। तो जिसकी डायरेक्शन को निकालना है उसको भेजो नीचे, और बचे हुए दोनों वेक्टर का कर दो मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट, इन डॉट प्रोडक्ट। सो वी लेफ्ट विथ दिस। ठीक है, और अगर वो एक्स वाई जेड के एस्पेक्ट में पूछे, ये रहा एक्स का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट है ही नहीं, बचा जेड का कंपोनेंट। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जो अपने को फंक्शन दिए थे उनका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो ए इन वही सेम प्रोसेस। ठीक है, नाउ फाइंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये अपने को कर्व दे दिया और यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो क्या निकालेंगे? वही ग्रेड निकालो। क्या निकालना है? ग्रेड। ग्रेड निकाल लिया अपनों ने, ये ग्रेड। अब ये क्या होता है? नॉर्मल होता है ना। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर विल बी सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स प्राइम। सो मॉडुलस। नए क्वेश्चन करेंगे तब डिटेल में करेंगे। सो ओके, दिस इज द ग्रेडियंट।